குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்பான நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம். I feel highly privileged and honored to announce before you the schedule of election for the office of the President of India, not only the highest elected office of the country, but of the largest democracy of the world. भारत के राष्ट्रपति का पद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सर्वोच्च चयनित पद है और जिसके चुनाव कराने की जिम्मेदारी संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। मैं अपने सहयोगी निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी एवं संपूर्ण निर्वाचन आयोग के साथ भारत के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूं। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, privilege and honor that the institution of Election Commission of India has successfully, freely, fairly conducted elections 15 times to the office of the President, and this is the 16th time, and we really feel very privileged and honored. So the format of today's briefing would be something as it is on your screen. So what we'll do is we'll show you the overview, इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, वोट्स की उनके वैल्यू क्या है, नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शंस की लोकेशंस कहाँ होंगी, वोटिंग कहाँ कहाँ होगी और कंडक्ट एंड रूल्स क्या हैं उससे रिलेटेड, और उसमें कुछ हम लोग नए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम करेंगे वो क्या है और लास्ट में शेड्यूल क्या है। The term of office of Shri Ramnath Kovind ji, Honorable President of India, is ending on 24th July 2022, as all of you know. As per Article 62 of the Constitution of India, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing President is required to be completed before the expiration of the term, which in this case is 24th July 2022. Article 324 of the Constitution, read with the Presidential and Vice Presidential Election Act, copies of which are here outside. You can also take copies. And the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974 vests the superintendence, direction and control of the conduct of election to the office of the President of India in the Election Commission of India. And Commission therefore, as I said, is fully geared up to discharge and perform this duty in a very, very free and fair way. जो एक्ट मैंने अभी आपको दिखाया उसकी धारा 4(3) में निर्वाचन के लिए जो अधिसूचना है वह निर्गामी राष्ट्रपति जी की पदावधि समाप्त होने से पूर्व 60वें दिन 60th डे या उसके पश्चात जारी की जा सकती है। और एग्जैक्टली इट इज वी आर फॉलोइंग दिस, इट इज आफ्टर 60th डे। एज पर आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेन, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय the members of the Electoral College consisting of elected members of both houses of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, and elected members of the legislative assemblies of all states, including National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Puducherry. और यहाँ ये एक बात इम्पोर्टेंट है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा में, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, they are not part of the Electoral College and therefore they are not entitled to vote. Similarly, members of the legislative councils are also not electors for the president election. Article 55(3) of the Constitution provides that election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote, and voting at such election shall be by the secret ballot. In this system, the elector has to mark preferences against the names of the candidates. तो वो किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं? वो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में यानी 1, 2, 3 कर सकते हैं, रोमन रूप में कर सकते हैं और
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज की जो रोमन जो 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 उसके शब्द हैं, उनमें अंक हैं, उनमें कर सकते हैं, और ये शब्दों में अंकित नहीं किया जा सकता है. Preference has to be marked in figures only and shall not be indicated in words. The elector also has to mark many preferences against the number of candidates. While marking of the first preference is compulsory for the ballot paper to be valid, और अगर किसी वोटर ने प्रथम चॉइस नहीं दी और बाकी चॉइस दी तो उसका वोट कैंसिल हो जाएगा. एक दूसरी विशेष बात है कि वोट देने के लिए आयोग अपनी तरफ से पेन प्रोवाइड करेगा. यह पेन पहले से ही एआरओस के पास रहेंगे और डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा मतदान केंद्र में वोटर्स को मत पत्र सौंपते समय दिए जाएंगे. सो दे हैव टू वोट ओनली बाय दैट पर्टिकुलर पेन. इफ किसी अन्य पेन का उन्होंने उपयोग किया तो मतगणना के समय उनका वोट इनवैलिड करार दे दिया जाएगा. The Election Commission, in consultation with the central government, appoints the ROs once from the Lok Sabha and second time from the Rajya Sabha. So this time, Secretary General Rajya Sabha will be appointed as the returning officer for the present election. The Commission has also decided to appoint assistant returning officers in all the state capitals, including NCT of Delhi and Union Territory of Pondicherry, and this is for making all the arrangements for conducting the poll and for transporting ballot boxes from Delhi to the state capitals where the voting will take place at the designated places, and also to bring back those ballot boxes. If in case the AROs are not, for some reason, fall ill or something, the Commission has also appointed the second assistant returning officers and will be distributing you a book in the form of a press note. What I am reading is available. This will be also uploaded. Appendix to this book gives you all the details of the ROs, AROs, their names, their phone numbers, everything. Now, coming to the place of voting, as per Rule 7 of the Presidential and Vice Presidential Election Rule 74, poll for the election will be taken in Parliament House and in the premises of the state legislative assemblies, including the legislative assemblies of NCT of Delhi and Puducherry, and the rule provides where legislative assembly meets for transaction of business. So this is what is provided in the rule itself, and the polling is required, if required, shall take place in these places, and the list of these polling stations is also given in the appendix 2 of the book I just showed you. Now I come to the value of the votes. Value of the votes of the elected members of the state legislative assemblies combined is 5,43,231, and similarly of all the MPs combined, it is all these slides would also be given to you. I suppose they must be already tweeted and must be with you on your system. So the states is 5,43,231, MPs is 5,43,200, so almost equal, and total is 10,86,431. While the Electoral College consists of MPs who are 776 and MLAs of the entire country who are 4,033, totaling to the voter list of 4809. So that's what is the total number. Now I come to the nomination papers. The nomination paper of a candidate has to be delivered only at Delhi, an office designated by the RO. और nomination के, and it cannot be at any other place, it has to be only at Delhi. Nomination में proposer के रूप में कम से कम 50 proposers, 50 members of the Electoral College will propose, and another set of 50 will second. They would be not common, new. So one set for proposing and one set for seconding. And an elector can subscribe to only one nomination paper of a candidate as either a proposer or a seconder. अभ्यर्थी
स्वयं इसको फाइल कर सकते हैं नॉमिनेशन को, या अपने किसी प्रपोजर या सेकेंडर के द्वारा 11 o'clock से 3 o'clock तक एक्सेप्ट हॉलीडेज फाइल कर सकते हैं. एंड एज पर द प्रोसीजर देयर इज ए सिक्योरिटी ऑफ 15,000 rupees which has to be filled. There are designated treasuries. There is an RBI office. What is all provided in the booklet. This is for more for the candidates. This can be deposited. Now, coming to the Electoral College again, as per Rule 40 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, the Commission maintains a list of members of the Electoral College, as referred to in Article 54, with their correct up-to-date addresses and for the purposes of presidential elections. A copy of the Electoral College is also being uploaded on the Commission's website. So anybody can see who is the member state-wise. That is all on the Commission's website. We will be posting it. And there are certain, in this list, we will require to update it because there are elections which are taking place for the Rajya Sabha to the 55 positions, result of whom is coming before the presidential election date. It is similarly, the voter list would be updated as and when the term of these MPs happen, and they will be part of the voter list. Similarly, in legislative assemblies also, wherever there are by-elections, and if the results come before the date of voting, their names would also be added in the voter list as a supplementary list, and all of that will also be put on the website of the Commission. Further, this voter list is also available if anybody wants to keep it as a record for ₹300 at our counter which is set up in our commission, but it's available on our website as well. As regards the date of polling, candidate can authorize a representative to be present at the time of polling and at the place fixed for counting. Or this has to be informed to us in advance so that the representative can be approved. About the place of voting for the MPs and MLAs. Normally, MPs are expected to cast their votes at the place of polling in the Parliament House, New Delhi. And similarly, members of the state legislative assemblies are also expected to cast their vote in the respective assemblies. However, if there is an emergency or there is some requirement, prior approval से voting location, किसी भी voting location पर MPs and MLAs दूसरी अपने वोट को डाल सकते हैं, बट इसके लिए कम से कम 10 दिन पहले आयोग को सूचना देनी पड़ेगी ताकि उनके वोट की व्यवस्था उस चेंज स्थान पे की जा सके. To, as I mentioned earlier, the Constitution has expressly provided that election to the office of President shall be by secret ballot. The electors are therefore expected to scrupulously maintain secrecy of vote. In this election, there is no, what you call the display of the vote at all. It is to be secret. There is no concept of open voting in this election, and showing the ballot to anyone under any circumstances will render the vote invalid. So the process is that after you have taken the ballot paper, you mark it in the compartment, fold it, and mark it with the pen, as I mentioned, which we have provided. Marking it by any other pen would also make it invalid. About the whips, it is also clarified that political parties cannot issue any whip to their MPs and MLAs in the matter of voting in the presidential election. There is no whip which is permissible in this election. As per Section 18 of the President and Vice President Election Act rules, the offence of bribery or undue influence in any manner, as defined in Section 171B and 171C of the IPC, by the returned candidate or any person with the consent of the returned candidate, are among the grounds on which the election can be held invalid by the Honorable Supreme Court in an election petition. So,
there is no way that any influence or any inducement or any case of undue influence which must be totally avoided. Otherwise, it's a ground for petition. तो दोबारा से सारांश में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने एमपीज और एमएलएस का कोई भी इशू नहीं कर सकेंगे, और क्योंकि ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्राइम की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन ग्राउंड्स पर इलेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द भी किया जा सकता है. Our COs in the states will supervise the arrangements and the election, as I mentioned earlier. Now we come to the COVID. Fortunately, it's not as an issue as it was, but still the Commission has decided to maintain every protocol as applicable in the respective states. The entire, on the day of polling and on the day of counting, the entire protocol would be followed. It has also been Commission's endeavor to make elections eco-friendly. This is our responsibility. And in view of the importance of this election and the fact that lawmakers constitute the Electoral College, and to reinforce criticality of environmental protection measures in policy and action, the Commission has directed the returning officers and assistant returning officers concerned to ensure use of eco-friendly and biodegradable material and eliminate the use of prohibited plastic material altogether. चुनावों को इको-फ्रेंडली बनाने के लिए प्लास्टिक मटेरियल की बजाय टोटली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करने का निर्देश कमीशन ने सभी को दिया है. Coming to the counting of votes will be held in New Delhi under the supervision of the returning officer, who happens to be the Secretary General of the Rajya Sabha. And on completion of the counting, the return of election in form number 7, as appended in the rules, will be signed and issued by the returning officer. So I have already stated that this press note booklet is available also, and this is copies are kept outside, but this is also available if anybody wants from our office as well. There are number of questions which are raised about this election. So we have also prepared a frequently asked questions, FAQs. There are 35 questions which we are uploading immediately after this. So I am sure that replies to whatever is in your mind would be available here. But anyway, if you want to ask anything. Now in the end, in pursuance of the subsection 1 of section 4 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, the Election Commission of India has fixed the schedule for the election to fill the office of the President of India as given in Appendix 3, and which I am reading out to you now. Can we put it on the... I was waiting for you to announce it, sir. So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022, that happens to be Monday. Thereafter we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. Thank you. We'll take your questions now. I'll again request you, पूछने के पहले कृपया अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन बोलें. हम सबका क्वेश्चन ले पाएंगे. कृपया जल्दी ना करें, एक एक करके पूछें, सबको सहूलियत होगी. I'll begin from first row then. हेलो सर, गुड इवनिंग. मोहित दुबे न्यूज़ नेशन से बोल रहा हूँ.
आपने तारीखों का ऐलान कर दिया, पूरी सूची आपने जारी कर दी। सवाल लगातार निष्पक्षता को लेकर उठता रहा है। रिजॉर्ट जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है या हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एक निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठता है, विधायकों को लेकर उठता है। क्या उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म आप लोगों ने बनाया है ताकि विधायकों को नजर रखी जा सके और निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाया जा सके? जैसे मैंने आपको अभी अपने संबोधन में बताया, इसमें 3-4 चीजें हैं। नंबर 1, ये पूर्णतः सीक्रेट बैलेट है। कोई भी इलेक्टर अगर बैलेट को दिखाएंगे तो वो बैलेट ऑटोमेटिकली उस दिन पर कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, पेन की एक व्यवस्था मैंने आपको बताई, ये पुराने इंस्टेंसेस जैसे भी हो चुके हैं, तो वो पेन वही इस्तेमाल करेंगे जो कि कमीशन उनको प्रोवाइड करेगा। अगर कोई भी पेन दूसरा इस्तेमाल हुआ तो वो काउंटिंग के समय में कैंसिल हो जाएगी। थर्डली, हर स्टेट में कमीशन एक सीनियर ऑब्जर्वर को अपॉइंट करेगा, जस्ट टू कीप वॉच ऑन दिस। ये हमने एक लिस्ट बनाई है जो बहुत ही वरीय एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको हम पोस्ट करेंगे हर स्टेट में, और हमारी ट्रेनिंग उनके लिए शुरू होने वाली है तुरंत ही 1-2 दिन में। वे विल बी एम्फेसाइजिंग ऑन दीज पॉइंट्स। और कमीशन का कंबाइंड, पूरे कमीशन का ये रिजॉल्व है कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस इस सबसे बड़े ऑफिस के चुनाव में कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए, और वो अगर होती है और इस तरीके की कोई भी इंस्टेंस सामने आती है, इट विल ऑल बी वीडियोग्राफ्ड ऑल्सो। अगर इस तरह की कोई इंस्टेंस सामने आती है तो दैट इटसेल्फ, एज आई मेंशन, इज ए ग्राउंड फॉर एन ईपी एंड इवन ए कैंसिलेशन ऑफ द इलेक्शन। குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பாக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் அந்த தேதிகளை அறிவித்திருக்கிறார். கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் எமது டெல்லி செய்தியாளர் சுசித்ரா, நீங்க தொடரலாம். பல குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் தேதி தற்பொழுது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. டெல்லியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தற்பொழுது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் இந்த ஒரு அறிவிப்பை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டிருக்கிறார். மிக முக்கியமாக வரும் ஜூலை 24ஆம் தேதியுடன் தற்போதைய குடியரசுத் தலைவராக உள்ள ராம்நாத் கோவிந்தினுடைய பதவி காலமானது முடிவடைய உள்ள நிலையில் புதிய குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தலானது வரும் ஜூலை 18ஆம் தேதி நடைபெறும் என்ற அறிவிப்பை தற்பொழுது தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டிருக்கிறது. வேட்புமனு, இந்த தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் ஜூன் 15ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் 29ஆம் தேதி வரை முடியும் என்றும், வேட்புமனுக்களானது ஜூன் 30ஆம் தேதி பரிசீலனை செய்யப்பட்டு மனுவை திரும்ப பெறுபவர்கள் ஜூலை 2ஆம் தேதிக்குள் திரும்ப பெறலாம் என்ற ஒரு அறிவிப்பையும் தற்பொழுது அதிகாரப்பூர்வமாக தேர்தல் ஆணையமானது வெளியிட்டிருக்கிறது. அனைத்து நடைமுறைகளையும் முடிவடைந்த பின்னர் ஜூலை 18ஆம் தேதி தேர்தலானது நடைபெற்று அதன் பின்னர் அதனுடைய வாக்கு எண்ணிக்கையானது ஜூலை 21ஆம் தேதி நடைபெறும் என்ற ஒரு அறிவிப்பையும் தற்பொழுது தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. ஜூலை 22ஆம் தேதிக்குள் அனைத்து நடைமுறைகளையும் முடிவடைந்து புதிய குடியரசுத் தலைவர் பொறுப்பேற்பார் என்ற ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் தற்பொழுது தேர்தல் ஆணையமானது வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்த தேர்தலுடைய நடைமுறைகள், பல்வேறு விதிமுறைகளையும் தற்பொழுது தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். 2 அதாவது அவையினுடைய உறுப்பினர்கள், மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையினுடைய உறுப்பினர்கள், அனைத்து சட்டமன்றத்தினுடைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட 3 பிரிவுகளாக உறுப்பினர்கள் சார்பாக இந்த தேர்தலில் வாக்குகளானது பதிவுபட உள்ளது. மிக முக்கியமாக ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் 10.5 லட்சம் வாக்குகளானது இதில் வாக்கு பதிவு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தற்பொழுது தேர்தல் ஆணையமானது கூறியிருக்கிறது. மிக முக்கியமாக குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலை பொறுத்த அளவில் மதிப்பீட்டு முறையின் அடிப்படையில் தான் இந்த தேர்தலானது நடைபெறும். உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை மட்டுமல்லாமல் ஒவ்வொரு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்காக வழங்கப்படும் அந்த மதிப்பீடு என்பது ஒரு எம்பிக்கு 708 இருக்கும். அந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலும் இந்த வாக்கு விகிதமானது எண்ணிக்கை என்பது நடைபெற உள்ளதும் மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதனால் பதிவாகும் வாக்குகள் மட்டுமல்லாமல் அதன் கூடுதலாக ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் பதிவாக உள்ள அந்த மதிப்பீட்டினுடைய அளவு, அதனை பொறுத்துதான் இந்த வாக்கு யார் அதிகமாக பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் அடுத்த குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. சராசரியாக சுமார் 10 லட்சம் வாக்குகளானது இதில் பதிவாவதற்கானவும் வாய்ப்புகள் இருப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது. சுமார் 5,49,000 வாக்குகளை யார் பெறுகிறார்களோ அவர்தான் அதிகபட்சமாக வாக்குகளை பெற்று மிக முக்கியமாக புதிய குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளார் என்பது மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நடைமுறை என்பது வரும் ஜூன் 15ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 22ஆம் தேதிக்குள் முடிவடைய உள்ளது. வாக்குனுடைய அந்த வாக்குப்பதிவு நாள் என்பது ஜூலை 18 ஆகும். வாக்கு எண்ணிக்கை என்பது ஜூலை 21ஆம் தேதி எண்ணப்படும் என்ற ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் தற்பொழுது தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டிருக்கிறது. பாலா, நன்றி சுசித்ரா, விரிவான விவரங்களுக்கு.
மேலும் பல்வேறு செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் இடைவேளைக்கு பிறகு.